the dust has begun to settle on the much debated Agnipath military recruitment scheme, is it time to step back and do an objective appraisal? And what of thousands of young men who had applied and cleared their exams under a previous recruitment proposal? I'm Barkhadat here with the Mojo story. Let's take you back through an issue that has dominated the headlines and then fallen off the headlines just as suddenly. The Indian Air Force says it has received more than 7.5 lakh applications under the new Agnipath military recruitment scheme that confines the term of airmen, soldiers and sailors to 4 years. It's been much debated, with some veterans advocating for it and some pushing against it. But today we bring you the human story of those young men who actually, before this scheme, with great difficulty, often from low-income homes, remote villages and small towns, cleared their exams but never got enrolled. Irrespective of whether you believe in the Agnipath scheme and welcome it or you are a critic of it, it is time for the government perhaps now to turn its attention on the plight of these anguished young men who had only one dream: to don the uniform for India. Let's introduce our guests on the program today. We are joined on the program today by Brigadier Vivek Chhatre. Brigadier Chhatre is a military veteran, if we can welcome him to the program. And he is also a lawyer, and he has been advocating for these young men, including going to change.org and beginning a petition, a crowd-backed petition to shine a light on the plight of these young men. Also joining us today to tell their story in their own words, सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ विकास. विकास उनमें से हैं जो अपना एग्जाम क्लियर कर चुकी हैं और अभी तक उनकी एनरोलमेंट नहीं हुई. और आज हमारे साथ निखिल भी हैं. लेट्स वेलकम निखिल टू द प्रोग्राम. निखिल भी एक एयरफोर्स एस्पिरेंट है जिनके साथ यही एक anguish or एक despair है. And also joining us on the program today is a military veteran, Group Captain Augustine. Welcome to the program, sir. Before we hear from the young men in their own words, Brigadier Chhatre, you're a military veteran, you're a Fauji, you're also a lawyer. You have decided to advocate for these young men. What made you take up this case, Brigadier? Yes, thank you, Barkha, and good evening, all the viewers. Now, here is a clear-cut case where a recruitment process was announced, and it had started pre-pandemic. And the exams were to happen sometime in March. 20th March was the exam. And all of a sudden, because of the pandemic, the whole procedure got postponed. And thereafter, it is dragging along for the next 2 years. In fact, the written exams happened after about 6 to 8 months. After that, they were called for interviews. They done their physical tests. They done their aptitude tests. And after that, they done the medicals. And all this has happened over a period of 2 years. And they were told that they are going to get appointment letters. And they have been waiting for these appointment letters all this while. And interestingly, in the meanwhile, there have been recruitment rallies in 5 to 6 different states, and close to 5,000 airmen have already been enrolled when these boys were in the waiting. And now, come Agnipath, all of a sudden, they are being told, officially, nobody has written a letter to them as yet, but they have just come to know through various press conferences that their recruitment has now been cancelled and they have to start all over again. So this is a clear-cut case of injustice, being done. And the act of the government, the government is the sovereign. It's supposed to act with responsibility. It's supposed to uphold the constitution. And this is a clear-cut case where a arbitrary decision has been taken. And it falls foul of Article 14. It also falls foul of Article 16.1, wherein everybody is supposed to get an equal opportunity. So, sir, before I come to the aspirants and then to Group Captain Augustine, my question to you is: this for you is not about whether you support Agnipath or you oppose Agnipath. You are saying whatever the new scheme is, at least take care of the young men who cleared their exams. Am I right, Brigadier? Yeah, absolutely right. Absolutely right.
the the boys here, we have got nothing against Agnipath. All they have Yes. to say is our process was started under the previous terms and conditions. Please complete the process. That is Yes. their humble plea. They have got nothing against the government or nothing against the Air Force or anything like that. Neither has there been any part of any of the violence here. So this is Yes. more important. That's a very Yeah. important point. In fact, many of the very devastated young men I've been speaking to have not even stepped out to join the protest. Many of them come from very, very remote villages, very small towns, low income households, where they really financially struggle to get to this point. Before I come to group captain, I'll get one of the aspirants. Nikhil, आपसे शुरू करूंगी. आप इस समय कहाँ हैं? अपने अपना कौन से शहर या गांव में है? बताइए निखिल. जी मैम, मैं मैनपुरी के उत्तर प्रदेश से हूँ। जी. और आपके आपकी फैमिली क्या करती है? जी मैम, मेरे पापा एक किसान हैं और हम जस्ट नॉर्मल फैमिली से हैं। तो एयरफोर्स ज्वाइन करने का सपना आपने कब से देखा? कब से ये आपके दिल में आई बात? मैम, ये उस टाइम की बात है जब सचिन तेंदुलकर को ऑनररी रूप में ग्रुप कैप्टन बनाया गया था। तभी मैंने न्यूज़पेपर में देखा था, तभी मेरे को लगा कि हाँ, एयरफोर्स एक अच्छा है करियर बनाने के लिए, एक देश सेवा करने के लिए भी है, तो ज्वाइन करना चाहिए। तो आफ्टर 12 मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी मैम। और प्रिपरेशन स्टार्ट जी बोलिए। जी, प्रिपरेशन स्टार्ट करते टाइम मुझे स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आई थी मैम, फाइनेंशियल इश्यूज। बट मैं ऑफलाइन कोचिंग के लिए मेरे पास इतने पैसे नहीं थे मैम, तो मैंने यूट्यूब और कुछ जो फ्री में मिल रहे थे ऑनलाइन कोचिंग्स, उनको ज्वाइन किया। जी, और आप कह रहे हैं कि कोचिंग क्लास लेने के लिए भी पैसे नहीं थे आपकी परिवार के पास? जी मैम। जी, और फिर आपने क्लियर कर दिया, उसके बाद क्या हुआ निखिल? मैम, हमारा एग्जाम मार्च 2020 में होना था, बट कोविड की वजह से ये नवंबर में हुआ। 26 नवंबर को हमारा रिजल्ट आया। उसके बाद आगे की रिजल्ट आके इन्होंने क्या किया, हमारी प्रोसेस थोड़ी स्लो चली। ये कई स्टेट्स में रैली ले आए, कंडक्ट करवाई, और उस बैच को इन्होंने कंप्लीट करके फरवरी में उनको ज्वाइनिंग दे दी। हमारी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस थी वो धीरे धीरे चलती रही। 2021 में हमारी 31 मई को प्रोविजन सिलेक्ट लिस्ट जारी हुई थी मैम। उसके बाद सिर्फ हमारा एनरोलमेंट होना होता है, उसके लिए हमें पर मंथ नोटिस दिया गया कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की वजह से डिले है। हमने कई बार डिफेंस मिनिस्टर को ज्ञापन भी दिए, CASB जो सेंट्रल एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड है उससे कांटेक्ट किया, बट मैम हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। और फिर अचानक से आके नेशनल मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे सपनों को तोड़ दिया गया। ये बताइए कि अब आपको ये लगता है कि आप तो ऑलरेडी चुन चुके थे बहुत मुश्किलात के बाद, तो अब आप क्या करेंगे? आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे निखिल जी? जी मैम, मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि चलो, आप एक बात बोलते हो कि किसी भी देश के लिए उस समय पर स्कीम्स लाना जरूरी होता है, मॉडर्नाइजेशन जरूरी होता है, हम इस बात को मानते हैं। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आपने लोगों को झूठ बोलकर पेंडिंग में रखा और उनके साथ धोखा कर दिया। मैम, इन्होंने कोविड का बोला कि कोविड है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। यूपी जैसे स्टेट में इलेक्शन हुए जहाँ प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री योगी जी की रैली में हजारों लोग आते हैं, तो लेकिन मैम इन्होंने हमें रोक के रखा। आज मैम हम कहाँ जाएं? हमने तो पूरी तैयारी कर ली थी कि हम ज्वाइनिंग करने वाले थे और हमें इन्होंने धोखा दे दिया। आप स्कीम लाए हो, स्कीम आप ला सकते थे, लेकिन हमारे जो पेंडिंग बैच थे उनको ज्वाइनिंग दे देते। जिनकी प्रोसेस 60% पूरी हुई थी उनकी प्रोसेस कंप्लीट करा देते। आपके पास टाइम था, लेकिन आपने फिर भी झूठ बोलकर हमको रोक के रखा और सडनली आप स्कीम लेके आ गए। जी, तो मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। मुझे लगता तो नहीं कि किसी ने जानकर झूठ बोला, बट ऑब्वियसली आई कैन फील योर पेन। एंड ग्रुप कैप्टन MJ Augustine, I'd like to bring you in. I think as Brigadier very rightly said, this is not a debate on Agnipath, right? That debate has happened. It will keep on happening. It's a work in progress. But this is about these young men. They're pained. They come from very sort of modest means, and they have had to struggle to get to this point. बहुत से लोगों ने तो शायद कर्जा भी लिया है। निखिल, आपके परिवार को भी क्या कर्जा वगैरह लेना पड़ा आपको पढ़ाने के लिए? Before I come to group captain, निखिल आप म्यूट पे हैं। एक मिनट निखिल, आप म्यूट पे हैं। जी जी मैम, मैंने फ्री क्लासेस ली थी बिकॉज मेरे पास पैसे नहीं थे। मेरी बड़ी बहन की शादी हुई थी, तो ऑलरेडी हमारी जो जमीन थी वो गिरवी रखी हुई थी, तो
तो ऐसी सिचुएशन थी। आज लगा कि जब जॉब मिल गई है तो हम घर में हेल्प कर सकेंगे, लेकिन सरकार ने हमारे सपनों को तोड़ दिया मैम। Okay, like I said, मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ. Group captain, your thoughts about this very peculiar situation. You see, the army did not conduct any recruitment rallies through the pandemic, but the Air Force did start the process. It had its clearances, the medical, the written exam, and so on, and then it froze them, citing administrative reasons. And these are Brigadier Chhetri. Am I right that there are a few thousand men, Brigadier Chhetri, at your last Yeah, count? absolutely. They're close to 3 to 4,000 men who are in the waiting. And Yeah. interestingly, more than 5,000 have already been enrolled. They came after these boys. They got selected. They joined the Air Force also. And one more Okay. point, Barka, here. Yeah. Just one more point. The Navy has done the same process, but the sailors in the Navy have been enrolled. So we couldn't be having two services following two different patterns. That's also very important here. If the Navy Okay. could do it, why couldn't the Air Force take these boys in? That is what is the point. Okay, Group Captain, go ahead, sir. Barka, first of all, thank you for having me on your show. Thank you, sir. You couldn't have caught a better person than me. I'll tell you why. I joined the Air Force as an airman. Oh, really? Airman, Really? That's interesting. Yeah. So, मैं एयरमैन से भर्ती होके 11 महीने ट्रेनिंग करके यूनिट पहुंचा. अपने जैसे जब निखिल की बात सुन रहा था तो मुझे अपनी my past just came in front of me. तो जैसे निखिल और बाकी हैं, ऐसे एक अम्बल परिवार से हमारी शुरुआत हुई. And from Where did there you come we from, moved, sir? Where did you grow up, sir? all over Barkat. My mother is a Maratha, father is a Mallu. So they got married during 71 ops and just before 71 ops. But you struggled like these young boys. You struggled like they did, and you joined as an airman as they are hoping to. Okay. Maybe more, because I funded my own studies. My father couldn't fund it because he lost some business and stuff like that. Anyway, that is for some other day. What is important for us to understand is two main things. One, like Brigadier covered, that these are few boys like Nikhil who've been selected and who've not been taken in by Air Force, whereas Navy has taken them in. So somewhere down the line, the CASB has made a mistake. I am more than certain. In fact, had I known this, I was there in headquarters 3-4 days ago for some other reason. I could have spoken to CASB and to ask them what is the final outcome, or where will these kids go? But I'm more than sure, Bharka, that their issue will be addressed and redressed. Either they will get a joining letter soon, or they will be asked to come for this Agniveer selection process as just to fall in line with this Agniveer selection process, but more or less they will get the job. So that is something. You are confident. You are confident that eventually these young men will get justice, Group Captain. Absolutely, I have no doubt in my mind, because in my entire 31 years of career, I have never seen Air Force doing such grave error, and this is error of omission more than anything, than commission. So this will get redressed and addressed. ये मेरा मानना है. समय बताएगा, and Brigadier has done a great job by moving a petition, change.org. I'm sure all this is finding its way through the maze of Air Headquarters where I retired from. So I know the maze of Air Headquarters. It is in the files. I am more than certain it will get redressed. इसमें निखिल को मैं बताना चाहूंगा, और निखिल जैसे बच्चों को मैं बताना चाहूंगा कि आप निश्चिंत रहें. एयरफोर्स एक ऐसा सर्विस है जो आपके आशाओं और आकांक्षाओं को बिल्कुल मद्देनजर रख करके डिसीजन लेगी, और आपके हाथ अगर थामा है तो छोड़ेगी नहीं. तो ये मेरा मानना है. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपको बोलेंगे कि चलो अग्निवीर वाले रास्ते में आ जाओ, लेकिन आपको ज्वाइनिंग लेटर तो मिल ही जाएगा. So that is my take on this particular aspect, which is
which is Yeah, just an and I'll come back aberration. and I'll come to the other aspects, and I very much hope that you and Brigadier are able to get these boys to fulfill their dreams, which is so moving to hear, Nikhil, that when I saw Sachin wearing the TA uniform, I too wanted to wear the uniform. Vikas, आप कहाँ हैं? विकास जी, आप कहाँ हैं? हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। Good evening, जी. मैम मैं हरियाणा स्टेट से महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ मैम। मैं जी, अपने बारे में कुछ बताइए। मैम मैंने ट्वेल्थ में मेरे फ्रेंड वगैरह एयरफोर्स ज्वाइन किया, तब मैंने उस टाइम सोचा था कि मैं एयरफोर्स ज्वाइन करूंगा। तो मैम मैंने 2080 में एक बार रिटर्न निकाला और सब प्रोसेस की, लेकिन मैं मेरे एक मार्क्स कम होने की वजह से मैं फाइनल मेरिट आउट हो गया। तो मैंने उसके बाद सोचा चलो कोई नहीं, अगली बार अच्छे से मेहनत करूंगा। तो मैम मैंने उसके बाद मेरा एक अटेम्प्ट निकला नहीं, लेकिन फिर ये 2019 में हमारा ये फॉर्म आया और 20 में हमारा एग्जाम होना था, लेकिन ये कोरोना के कारण ये डिले होता होता नवंबर में गया मैम। नवंबर में हमारा एग्जाम हुआ, नवंबर में रिजल्ट आया मैम। उसके बाद सब मेडिकल प्रोसेस फिजिकल सब होया मैम। मैम फिर मैंने अंडर 6 स्टैंडर्ड के अंडर मैंने रैंक, मुझे मेरी रैंक मिली और मेरा सब कुछ हो गया। लेकिन और पीएसएल हमारी 31 मई 2021 को आई, लेकिन मैम ज्वाइनिंग उन्होंने इनरोलमेंट डेट दी कि 10 जुलाई को आपकी इनरोलमेंट लिस्ट पब्लिश हो जाएगी। लेकिन मैम कोरोना के कारण एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन डिले करके जी, उन्होंने 1 साल तक हमने वेट कराया। और 1 साल बाद ये अग्निपथ स्कीम आने के बाद ये कहते हैं कि जो पेंडिंग रिक्रूटमेंट है वो सब कैंसिल हो गई। मैम इसमें हमारी क्या गलती थी? नेवी ने अपनी कंप्लीट प्रोसेस सभी पेंडिंग, कोई भी पेंडिंग नहीं रखा मैम। जी। हमने हमारे साथ ऐसा गलत क्यों हुआ मैम? अपना परिवार के बारे में कुछ बताइए, कितनी मुश्किलात से मैम आप इस पॉइंट पे पहुंचे, विकास जी। मैं एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पापा जी एक छोटे से फार्मर हैं। इस टाइम भी मैं देखो खेत में आया हुआ हूँ, सुबह शाम मैंने खेत में मेहनत की है पापा के साथ, और दिन में मैंने रात में जग जग के पढ़ाई की। क्योंकि मैम आपको ही पता है सर्विस वाला बंदा अपना एक है ना पूरी फैमिली को चला लेता है, लेकिन फार्मर में सभी को साथ मिलके काम करना पड़ता है। तो मैं साथ सुबह अभी देखो मैं खेत में आया हुआ था और ना फिर पापा भी मेरे साइड में ही। हाँ मेरे पापा भी अच्छा, आपसे पापा, बात करना चाहते चलिए कराइए। हैं। यस आपके मैम। पापा का नाम क्या है? मैम रणधीर सिंह है मैम पापा। रणधीर जी, आपने नमस्कार। नमस्कार नमस्कार जी। रणधीर जी, नमस्कार नमस्कार रणधीर जी। हाँ आप जी। किसान हैं सर? हाँ किसान हैं? हाँ हाँ जी, मैं एक किसान हूँ, छोटा किसान हूँ। और मैंने तो ये एक उसमें रह गया था पहले थोड़ा एक नंबर से। तो भाई मैं कोई बात नहीं, तू कोचिंग कर। पैसे लगाए इधर उधर से, ब्याज से पैसे पकड़ के इनको बच्चों को लगाया, दुख सुख पाके अब ये नु बोले पापा अब मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। इसने पढ़ाई भी छोड़ दी मैम। अच्छा, मतलब आपने विकास अपना पढ़ाई छोड़ दी ये सोच के कि आप एयरफोर्स में भर्ती हो रहे हैं? हाँ मैम जी। मैम मैंने बीए में एडमिशन ले रखा था। फर्स्ट ईयर मेरी कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद है ना एडमिशन के लिए फीस देना था। मैंने सोचा मेरा सिक्योर था, मेरी रैंक भी सिक्योर थी, ताकि फिर मैंने मेरा एडमिशन नहीं लिया। मैंने सोचा था अरे अब फायदा क्या एडमिशन लेके, मुझे तो जाना ही ज्वाइन करना है। तो उसके बाद 1 साल तक हमने वेट भी किया, ना तो हमें एयरफोर्स की तरफ से ज्वाइनिंग लेटर मिला और मेरी ग्रेजुएशन भी अब वो खराब हो गई मैम। अच्छा, ये पापा से मैं पूछना चाहती हूँ रणधीर जी, अब वहीं पे रखिए कैमरा, अभी आप दोनों की शक्ल मुझे दिख रही है, वहीं पे विकास पकड़े रखिए बस। हाँ रणधीर जी, आपने कहा आपको कर्जा लेना पड़ा, जरा उसके बारे में बताइए। अभी बच्चे मेरे 3 लड़के, 2 बच्चे लड़के और एक लड़की, उनकी शादी शुदी और फिर ये बच्चों की पढ़ाई। इतना मेरे से इतना बड़ा जमींदार नहीं था कि मैं इन तीनों का भार उठा सकूं। बड़े वाले लड़के को भी मैंने कोचिंग दिलवाई जी और ये इसमें भी तीनों का भार मेरे से नहीं पटा। जी तब मैं मेरे को भाई लोड ले लेते हैं, लो इधर उधर से पैसे किसी के पकड़ जी। के और इनके लगाए जी। कितना कर्जा लेना पड़ा सर? कितना कर्जा लेना पड़ा? 3-3.5 लाख रुपए मेरे लग चुके जी। जी जी। मतलब सब कुछ करने में, शादी लड़की की और बेटों बच्चों को नहीं ये नहीं है। नहीं जी, फिर? इस बच्चे के ऊपर लगे जी इतने। तो 2 साल इसको कोचिंग, दिल्ली कोचिंग करवाई दुख सुख अच्छा, पाके। कोचिंग कराई, अच्छा अच्छा, लोन हाँ लिया। अच्छा अच्छा अच्छा, ये आपने हाँ जी। कोचिंग, तो आपने कोचिंग क्लास करने के लिए पैसे देने के लिए लोन लिया रणधीर जी, हाँ साढ़े जी। 3 लाख का, और ये हाँ क्लियर जी। भी हुए, ये पास भी हुए, और अब इनकी एप्लीकेशन अटकी हुई है। तो रणधीर जी, यहाँ पे हमारे बड़े अफसर हैं फौज के, एयरफोर्स से ग्रुप कैप्टन है, आर्मी से ब्रिगेडियर साहब है, उनके थ्रू आप क्या कहना चाहेंगे, उनके जरिए सरकार को, अपनी फौज को? मैं तो मैम ये कहना चाहता हूँ कि जब इन्होंने कोई डिसीजन लेना था, ये पेंडिंग ये बंद कर हो कि भाई हम कुछ निर्णय लेके उसके बाद में रूल बदलेंगे। ये इस भरोसे रख दिए कि आपको बुलाया जाएगा बुलाया जाएगा।
इनका इस चीज में समय खराब कर दिया। जब ये पहले बता देते तो ये बच्चे कोई और रास्ता अपनाते, अगर भाई हमें तो और ये इसमें नहीं तो और कोई दूसरा रास्ता अपनाते नौकरी के लिए। और आप कह रहे हैं 3.5 लाख रुपए का लोन इनको कोचिंग क्लास दिलवाने के लिए, इन्होंने बीच में अपनी दूसरी पढ़ाई छोड़ दी सोच के कि अब ये एयरमैन बनने जा रहे हैं, तो अब इनके पास हाँ और जी। प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी नहीं बची। ग्रुप कैप्टन एंड ब्रिगेडियर, आई वांट टू ब्रिंग यू इन। ग्रुप कैप्टन ऑगस्टीन, आई स्टार्ट विद अभी यू। इट्स मैं रियली, अभी तो हाँ जी जी, बोलिए बोलिए रणधीर जी, अभी मैं बोलिए। ये कह रहा हूँ भाई, कोई बात नहीं, मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा और तू अपनी फिर से पढ़ाई जारी रख। अब नहीं होया तो, लेकिन ये सरकार के मेरे से तो इस चीज का दुख नहीं है कि सरकार ने रूल बदल दिया। ये 4 साल वाली अग्निवीर अग्निपथ ये योजना है, इससे हमें कोई दुख वाली बात नहीं है, लेकिन इनके साथ जो खिलवाड़ किया है ना जी सरकार ने, उस चीज का दुख है। ये इन बच्चों को भ्रम आप में डाल दिया इन्होंने। बहुत अच्छी बात बोले कि आप अग्निपथ की डिबेट से नहीं जुड़ रहे हैं ग्रुप कैप्टन। इट्स रियली हार्ट ब्रेकिंग। दीज आर द एस्पिरेशंस ऑफ ऑर्डिनरी इंडियंस। दिस इज अ फार्मर फादर हु टेक्स अ लोन ऑफ 3.5 lakh rupees, 2 years coaching classes for his son. The son leaves his other studies, he clears the exam, now he has nothing else to do, he has nowhere else to go. Group captain, heartbreaking story. Absolutely, Barka, and I feel for him. I mean, I remember when I went to get selected, back in the late 80s. Information was not there. I thought everyone who joined became a pilot. So that is how unreserved I went to Delhi. From that time, we were living in Mumbai. Went to Delhi, and there were no coaching classes then, and I don't think there is a requirement of coaching classes anyways. And got selected, and promptly the joining letter came. And I'm just putting myself in the shoes of Nikhil and Vikas. What if the joining letter had not come? I would have been heartbroken. Yeah. I mean, there is no two ways about it. So this is absolutely news to me that only Air Force has done such a faux pas, which I'm more than sure that they will address it in some Yeah. form or manner. Firstly, and secondly, if I can take this message, which I will, and probably Barka come back to you and tell you what is, if they can reveal Well, to me. Because I hope you'll be able to help these young boys. We are also seeing Shivam join us, but I'll come to, and he's on a very, very bad internet connection, which also tells you the kind of places, the small towns, villages that they're joining from. Brigadier, very heartbreaking story Randhir ji ne jo batai. Brigadier Chhatre, would you like to say something to this family, sir? Yeah, certainly. Each one of them has got this kind of a story. You know, there are boys who were selected for engineering at places. There are boys who had other career options. There are boys who were selected in the police and so on, who gave up that selection in the hope that they are going to be picked up by the Air Force. This is the saddest part of it. And I'm so very happy, you know, my co-panelist, Group Captain Augustine, sees a hope. And I fully agree with him. Probably now at the moment, the case is still in the domain of the executive. And there appears to be a very big misunderstanding at the air headquarters. I think that's how this faux pas has taken place. And I'm very sure even if all these boys are taken in under the old scheme, still there'll be a saving to the state. So it's going to be a win-win situation. So we should be looking at resolving the issue quickly so that all these boys get the relief and even the state is benefited. You know, you have a set of people who have already been tested, who have gone through the annual, who have gone through the testing, who have qualified, and who are waiting in the wings. Yes, So, I'm very relieved to hear both of you feel hope that this can be resolved. And knowing the military and its sense of looking after its own, I'm pretty sure that there is going to be a resolution to this sooner rather than later. Shivam, आप कहाँ से join कर रहे हैं हमें, शिवम जी? यूपी से मैम। किधर मेरी आवाज आ रही है? किधर है? आ रही है, कहाँ यूपी कानपुर से मैम। यूपी कानपुर से मैम। अपने बारे में बताइए मैम। मैंने 2000 जी मैम, मेरे पिताजी किसान हैं और मैं भी एयरफोर्स में सेलेक्ट हुआ था, ये एयरमैन एक्स ग्रुप के लिए। और जो हमारा एग्जाम था ये अप्रैल 2020 में होना था, लेकिन कोरोना की वजह से फिर क्या हुआ कि इसको पोस्टपोन करके नवंबर में करवाया गया। फिर सारी प्रोसेस जनवरी फरवरी में करवाई गई और फिर हमें प्रोविजनली सिलेक्ट भी कर दिया गया 31 मई 2021 को। हमें ये भी बोला गया कि अब आप प्रोविजनली सिलेक्टेड हैं और आपकी ज्वाइनिंग मोस्ट प्रोबेबली जुलाई में हो जाएगी।
तो हम लोगों ने वेट किया कि चलो अब तो प्रोविजनली सेलेक्ट हो ही गए हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज है, डिसीजन थोड़ा लेट हो रहा है, पर ये कभी होप नहीं थी कि ये कैंसिल हो जाएगा। ये ऐसा हम लोगों ने कभी होप ही नहीं आप किया था। अपनी फैमिली और अपने परिवार, अपने घर की हालात कुछ जी बताइए, बताइए। जी जी मैम, मेरे पिताजी किसान हैं और हम लोग बड़ी ही पुअर फैमिली से हैं। राइट नाउ मेरे पास ये समझ लीजिए लाइव स्ट्रीम में आने के लिए फोन भी नहीं था, वो भी मैंने पड़ोसी से लेके अभी लाइव लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ, ये समझ लीजिए आप। ये कंडीशन है मेरी। और मैं आपको दिखाना चाहूँ लाइव कैमरे में, तो एक मिनट लाइव कैमरे में दिखाना चाहते दिखाता हो, हूँ क्या दिखाइए कंडीशन है हमारी। जी, दिखाइए। जी मैम, ये देखिए ये कंडीशंस है हमारी, इस तरीके से आप वी आर अपने लिविंग राइट नाउ। आप अपने ये फोन देखिए को दिखाई दे रहा आप है। अपने सुनिए, आप अपने फोन को लिटा सकते हैं, मतलब दूसरी तरफ कर सकते हैं, वर्टिकल ना करके, क्योंकि इतना दिख नहीं रहा है। जी मैम जी, एक जी, मिनट। एक एक और रोटेट कर लीजिए। और उतनी देर में जब आप अपना गांव का हमें दिखाना चाहते हैं कि इतनी गरीबी जहाँ पे फोन ना हो लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करने के लिए, इसमें निखिल अगर आप कोई बात जोड़ना चाहें तो जी आप जी बोलिए। और हाँ, एक मिनट शिवम। हाँ शिवम, चलिए आप ऐसे जी ही दिखा दीजिए, शिवम ऐसे ही दिखा दीजिए अपने घर की हालात, हमें दिख रहा है, बताइए। जी, तो वही चीज़ है मैम कि हम लोगों के पास खाने का पैसा तक नहीं था, फिर भी मेरे पिताजी ने लोन वगैरह लेके मुझे तैयारी करवाई कि चलो आप पढ़ाई करो। तो मैंने पढ़ाई करी और सेकंड अटेम्प्ट में मैंने एग्ज़ाम को क्रैक भी कर दिया और मेरी अच्छी खासी रैंक भी थी। मेरी रैंक इसमें 1922 ऑल इंडिया रैंक थी एक्स ग्रुप में। तो जी जी। हमने तैयारी और करी, ये मेरा ये जो घर है। हम जो ये आपका जी, घर है, ये एक मिनट उसी पे स्टेबल जी, रहिए, ये आपका घर है। तो आप इस झोपड़ी में रहते हैं जी, अपने जी, किसान परिवार के साथ। जी, तो और फोन भी जी, नहीं, जी, फोन भी बोरो करना पड़ा है। ना और और ये फोर्स, जी, जी, ये एयरफोर्स ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं? अपने सपने के बारे में कुछ बताइए। मैम जी, जी। जब मैं कक्षा 8 या 9 में था तो मेरी मम्मी बताया करती थी और मेरे कई रिलेटिव्स भी हैं एयर फ़ोर्स में, तो बताया करती थी कि ये देखो एयर फ़ोर्स है। तो मैंने भी इसके बारे में जब जानकारी करी कि मैं इसको कैसे जॉइन कर अच्छा, सकता हूँ, अब आप तो भैया लोगों कैमरा से के जब सामने, जानकारी मिली। एक मिनट, एक मिनट, कैमरा के सामने आ जी, जाइए, अब आपकी शक्ल जी, देखना चाहते हैं, आप बताइए। जी, मम्मी ने क्या बोला, मम्मी ने क्या बोला? जी। तो जब हाँ, मम्मी ने बोला बताया कि देखो बड़े भैया हैं, वो यहाँ हैं, वहाँ हैं ड्यूटी में। तो फिर मैंने भैया से पूछा कि भैया मैं कैसे जॉइन कर सकता हूँ? तो उन्होंने बोला 2 तरीके से जॉइन कर सकते हो, या तो एज़ अ ऑफिसर या तो फिर एज़ अ एयरमैन। तो क्योंकि ऑफिसर्स बनने के लिए क्या है मैम, थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा और हमारी गरीब फैमिली है तो इतना ज़्यादा वेट नहीं कर सकती है कि हम पढ़ाई ही करते रहें। तो मम्मी ने जी भैया ने बोला कि तुम ऐसा करो, इंटर के बाद मतलब 10+2 के बाद आराम से एयरमैन के लिए ट्राई करो और पढ़ाई अच्छी करोगे, हो जाएगा। तो मैम मैंने पढ़ाई करी और मेरा सिलेक्शन भी हो गया। लेकिन और इसके बाद अब बताइए ये सिचुएशन है। फैमिली फैमिली का लोन, कर्जा वगैरह भी लेना पड़ा जैसे विकास के साथ हुआ? जी, जी। जी मैम, लोन इस वज़ह से लेना पड़ा कि ये पढ़ाई कर रहा है, इसके बाद जब सिलेक्शन हो गया तो सारे प्रोसेस करने के लिए मतलब मुझे बरेली मेडिकल देने जाना पड़ा और मेरा वेट वग़ैरह भी कम था तो खिलाई-पिलाई करनी पड़ी और दौड़ने के लिए मेडिकल मेरा 1-2 इश्यूज़ था तो उसको भी क्लियर करवाने के लिए सारा का सारा करीबन-करीबन हमारा 1 लाख के करीब खर्चा आ गया था। तो वो भी पापा ने इधर-उधर गाँव में ले रखा है, तो अब वो भी हमें देना पड़ेगा। बड़ी मतलब क्या है कि वही सारी चीज़ें हैं। या मैं तीनों से आपसे कहती हूँ कि हम आप तीनों का दर्द समझते हैं। क्विक जी, लास्ट वर्ड्स टू ब्रिगेडियर एंड ग्रुप जी। कैप्टन। ब्रिगेडियर सर, ब्रिगेडियर छत्री, you're on mute, sir. I think from your end. Yeah, can you hear me now? Yes, sir. Am I audible? Yeah. Yes, sir. So you've seen the human element now, and definitely these boys need to be helped. There's no doubt about it, and there is no case at all. I mean, if this I would rate this case as 100:0 on merits. You know, if you get into litigation, so I'm sure better sense will prevail. And as I said, there definitely appears to be a mistake somewhere, and Yes. we still have time to rectify it. So, without getting into the merits of the Agnipath scheme and so on, these boys who were already selected on a previous terms and conditions, they need to be given appointment letters on the previous terms and conditions. And the basic of service jurisprudence is any new policy that comes in, it is applied always with prospective effect. It can never be applied with retrospective effect. So now, Yes. first of all, denying these people the enrollment, that itself would be illegal. That is number one. And second is even they need to be given given the enrollment
under the previous terms and conditions. Yeah. Now the entire... Shivam, आप कुछ बात जोड़ना चाह रहे हैं, then group captain gets the last word. बहुत जी संक्षेप में जोड़िए जी जी। जी मैम, क्या है कि जो हमारा नोटिफिकेशन था उसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं था कि आपके रिक्रूटमेंट को कैंसिल किया जा सकता है। अकॉर्डिंग मतलब क्या है कि लीगली भी हम अगर फाइट करेंगे तो गवर्नमेंट के पास कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई रिप्लाई नहीं है दैट दे कैन जस्ट रिफ्यूज अस। पर क्या है कि अब हम लोगों की आवाज उठाने के लिए सर आगे आए हैं। इसके अलावा तो सर मैं वही है कि इस वजह से मैं कहना चाहता हूँ, गवर्नमेंट से यही मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारी जो रिक्रूटमेंट है उसको कम से कम पूरा किया जाए। आप जो रूल ला रहे हैं वो जिस डेट को अनाउंस होती है उसके बाद से लागू होती है, उसके पहले से लागू नहीं होती है। मैं जी, ग्रुप कैप्टन यही चीज लास्ट मैं वर्ड कहना टू यू। चाहूंगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ग्रुप कैप्टन लास्ट वर्ड टू यू। आई होप veterans like yourselves and Brigadier Chhatri can raise this and resolve this in some ways, because these are really heartbreaking stories. This is the backbone of our military, our airmen, our sailors, our jawans, and to see them anguished like this, they only want to serve the country and wear the uniform. Group captain Barka, and this is God ordained, I would say, that we are having a program today, and I am sitting here with you. As I was going through the program, I sent all this information along with the screenshot, etc., to the powers that be, and I was hoping like hell that I will get an answer straight away so that we can give the answer to the children, be that as it may. Yes, sir, absolutely. And friends at good places, and especially ones who will take decisions, I have sent it there. So thank you. just hope that this aberration is corrected. But मैं बच्चों को ये कहना चाहूंगा, आप गवर्नमेंट को दोषी ना ठहराइए, क्योंकि हर छोटी चीज में गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होती है। ये जो है एयरफोर्स का जो एयर हेडक्वार्टर्स है, इसके दायरे के अंदर है। गवर्नमेंट में या किसी भी पॉलिटिशियन को या साउथ ब्लॉक नॉर्थ ब्लॉक को किसी को इसके बारे में पता भी नहीं होगा कि ऐसा कोई गलती हुआ है एमएन सिलेक्शन सेंटर की तरफ से। तो मेरा ये उम्मीद है, और जैसे ब्रिगेडियर ने कहा है और एक बच्चे ने भी कहा है, ये when we go to litigation it will not stand water, so these children have to be given the joining letter. So there is it's a no brainer actually for Air Force to give them the joining letter, and they will do it, because for such a thing they will not like to go and fight it out in the court. So well, with your blessings, a group good captain, outcome from let's hope, fingers crossed. Yeah, thank you, sir. Thank you, Group Captain and Brigadier Chhatri, for lending your military. Just last one point, please. My gratitude to change.org for having hosted this petition and promoted this petition, having helped me to make my voice reach a larger audience. Now close to about 9,000 people have signed the petition, and they have brought it to your notice also. So I'd like to place on record my thanks to change.org. Yeah. And my thanks to you too. Not at all, sir. My thanks to Group Captain and Brigadier for lending your heft and your experience to the dreams of these young men. All they have is a hope in their heart. They've struggled to get to this point, and I hope we can help them collectively. Thank you very much. And आपसे यही कहेंगे कि आप please keep hoping. मुझे लगता है कि आपकी कहानी आप national stage तक पहुंच चुकी है, and I'm hoping for a good resolution. So Vikas and Shivam and Nikhil, I'm sure कि Brigadier sir और Group Captain sir अब आपकी आवाज आगे उठाएंगे, and we can resolve this. Thank you very much, everybody. God bless. Take care. It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.